हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अज असी स्टार्ट करांगे जिमैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हुण तक असी कीती सी इस तो पहला डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच सब तो पहला असी कीती सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट जिमैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। let x denotes the number of failures preceding the first success x denote कर रहा है number of failures preceding the first success, पहली सक्सैस मिलन तो पहला दे नंबर ऑफ फेलियर्स नू असी किहदे नाल डिनोट करना, एक्स नाल। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और वी कैन से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू टू द पावर एक्स इंटू पी इफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो पहली सक्सैस मिलन तो पहला दे जिन्ने भी नंबर ऑफ फेलियर्स ने देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू टू द पावर एक्स इंटू पी, वेयर एक्स इज एक्स की वैल्यू की है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर असी गल करिए एक्स की वैल्यू 0 है, देन वैल्यू की आएगी p क्यू टू द पावर 0 विच इज 1 इंटू पी। क्यू की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट की क्यू पी, क्यू स्केयर पी, क्यू पी, क्यू इंटू पी एंड सो ऑन। देखो अगर असी प्रोबेबिलिटी की गल करिए, इट मीन सानू फस्ट अटैम्प्ट दे विच सक्सैस मिली आ। जिद्दां कि असी एक क्वेश्चन भी किया सी कि अगर तुहाडे कोल बॉक्स दे विच n कीज ने, उहदे विचों इक्को करैक्ट आ ते बाकी सारियां की ने n-1 की ने इनकोरैक्ट। तो असी कोई की रैंडमली पिक करनी आ, या तो हो सकता हो कि पहली बार करैक्ट आ जाए साडे कोल, लॉक ओपन हो जाए, है ना। तो यह मतलब तो यह है भी कोई नंबर ऑफ फेलियर्स किन्ने आ गए 0 इस केस दे विच, क्योंकि फस्ट अटैम्प्ट दे विच सानू सक्सैस मिल गई। यह भी हो सकता कि तुहानू सैकेंड अटैम्प्ट च सक्सैस मिली आ, फस्ट टाइम तुहाडे कोल इनकोरैक्ट की लग गई। हुण इहदे विच यह है भी तुसीं ओह जिहड़ी ये प्रोसैस आ, मतलब जिहड़ी तुसीं अटैम्प्ट कर रहे हो की किती वो वापस विच पा रहे हो, क्योंकि अगर तो तुसीं विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे, अगर तो विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे फिर तो ये जिहड़ा प्रोसैस आ आफ्टर n स्टैप्स बाद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट nth प्रोसैस दे विच, क्योंकि अगर तुसीं इनकोरैक्ट कीज एलिमीनेट करी जाओगे तो लास्ट nth जिहड़ा तुहाडा प्रोसैस होगा, nth अटैम्प्ट होगी, उहदे विच तुहाडे कोल लास्ट एक की बचनी है जिहड़ी कि करैक्ट होएगी। लेकिन ये जिहड़ा केस है इत्थे साडे कोल की ने इनफाइनाइट, मतलब असी रिप्लेस उन्हों बाहर नहीं रख रहे इनकोरैक्ट नूं, उन्होंने विच रिप्लेस करी जाने आ। सो मे भी हो सकता बार बार तुहाडे कोल इनकोरैक्ट आई जावे, ठीक है। सो इसलिए प्रोसैस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चल सकता। सो इसका मतलब पी की गल करिए फस्ट अटैम्प्ट दे विच सक्सैस मिल गई, या फिर ये हो सकता कि सैकेंड अटैम्प्ट च सक्सैस मिली आ, एक फेलियर हुई, 2 फेलियर हुई ने तो मतलब थर्ड अटैम्प्ट च सक्सैस मिली आ, 3 नंबर ऑफ फेलियर्स ने तो मतलब तुहानू ये आ कि फोर्थ अटैम्प्ट दे विच सक्सैस मिली एंड सो ऑन। सो नंबर ऑफ फेलियर्स की अगर असी गल करिए, इट कैन बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द PDF and it is called geometric distribution. It is known as geometric distribution. Clearly अगर असी गल करिए कि ये फंक्शन PDF की प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता,
Clearly fx is greater than equal to 0 for all x belongs to sample space 0 1 2 3 up to so on. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सैकेंड कंडीशन की गल करिए समीशन एफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to infinity means x varies from 0 to infinity summation q to the power x into p plus qp plus q square p qp and so on. Taking p common we will get 1 plus q square plus qq and so on. p this is infinite GP series. इनफाइनाइट जीपी सीरीज ਇਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ a over 1 minus r. So p over p which is equal to 1. So therefore this function form a PDF. So this is the PDF of geometric distribution random variable x. Now कुछ ਇਹਦੇ इंपॉर्टेंट फंक्शन जिदा कि ਅਸੀਂ बाइनोमियल ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦਾ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ਇਹਦਾ मीन वेरिएंस. सो अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की गल करिए स्टूडेंट्स नो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन mxt विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx summation e to the power tx into fx. X varies from 0 to infinity. So e to the power tx into fx. Fx is what? Q to the power x into p. So we can take p common. X varies from 0 to infinity. So this can be written as q into e to the power t whole to the power x. Say this is number a, so denote a by q into e to the power t. So therefore we have a to the power x where x is varies from 0 to infinity. Now value put करिए a to the power 0 1 plus a square plus a cube and so on. Infinite GP series 1 over a over 1 minus r. A is 1. First term is 1. First term over 1 minus r. Common ratio is a. Now a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਟ a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ q into e to the power t. So therefore moment generating function of the geometric distribution is p over 1 minus q into e to the power t. Here a will be greater less than 1 means q into e to the power t will be less than 1. क्योंकि जदों असी फार्मूला लगाने आ सम दा 1 over a over 1 minus r then r is less than 1. So this is the moment generating function of geometric distribution. Now we will discuss its mean and variance. As we know, mean and the variance of any distribution can be find from the moment generating function by differentiating moment generating function with respect to t. Now moment generating function which is equal to p over 1 minus q into e to the power t. So p into 1 minus q into e to the power t raised to the power minus 1. So this is the moment generating function. Now differentiate moment generating function with respect to t curly m dash t which is equal to p into minus 1 1 minus q into e to the power t raised to the power minus 2 into minus q into e to the power t. So which is
पी क्यू ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू ई टू द पावर टी होल स्क्वायर. दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. नाउ पुट टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर असी टी की वैल्यू 0 सबस्टिट्यूट कर दिए एम डैश टी दे विच, वी विल गेट दी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन्स म्यू. नाउ पुट टी इज इक्वल टू 0, एम डैश 0 पी क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर. सो पी क्यू ओवर पी स्क्वायर बिकॉज 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू पी. So this is Q over P. So arithmetic mean of geometric distribution is Q over P. Now अगर असी वेरिएंस फाइंड करना, then असी की करांगे, एक बार डिफरेंशिएट करांगे नू m dash t नू, अगेन डिफरेंशिएट both side with respect to t. So m double dash t 1 minus q e to the power t to the power 4, 1 minus q into e to the power t whole square into derivative of numerator. So derivative of numerator is 1 p q e to the power t minus, now numerator as it is, derivative of denominator which is 2 into 1 minus q e to the power t to the power 1 into minus q e to the power t, minus q e to the power t. So simplify करन तो बाद, after simplification we will get p q e to the power t 1 plus q e to the power t divided by 1 minus q e to the power t whole cube. So this is the m double dash t. Now for एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की गल करिए, और वी कैन से दैट म्यू टू डैश विच इज इक्वल टू एम डबल डैश 0. डबल डेरिवेटिव दे विच टी की वैल्यू 0 सबस्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट म्यू टू डैश. सो पी क्यू 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू होल क्यू. So PQ 1 plus Q divided by PQ which is equal to Q 1 plus Q over P square. So this is the expectation of x square, but we are to find variance. As we know, variance is denoted by mu2 and mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. So mu2 dash which is q into 1 plus q divided by p square and mu1 dash whole square. So mu1 dash is q over p. So after squaring we will get q square over p square. And after simplification by taking LCM we will get q over p square. So this is the variance of geometric distribution. Now question is, if the probability that a certain test yields positive result is equal to 0.4, किसी टेस्ट दे विच पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.4. Find the probability that fewer than 3 negative reactions occur before the first positive result. वैसे तो उन्हें fewer than क्या, लेकिन अगर समझने ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए, वो कह रहे हैं कि negative reactions occurs before first positive result. First positive result मिलन तो पहला दे नेगेटिव रिएक्शंस की गल कर रहा. सो इट मीन्स वी विल यूज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन.
क्योंकि पेपर 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। So therefore x is a geometric variable. So let x denotes the number of negative reactions before first positive result. So therefore its PDF is equal to q to the power x into p. X is vary from 0, 1, 2, 3 and so on. Now question is, we are to find the probability fewer than 3 negative reaction, 3 ਤੋਂ ਘੱਟ negative reaction। अगर ਤਾਂ exactly 3 negative reaction ਕਹਿੰਦਾ, then we will put x is equal to 3. Now we are to find the probability when x is less than 3, means x is equal to 0 or 1 or 2. Probability at x is equal to 0, 1, 2 means x 0, 1, 2, or we simply say that f of 0 plus f of 1 plus f of 2. So f of 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, that is p plus qp plus q square p, and p is what? Positive result on the probability 0.4 it is given, so therefore q is equal to 0.6. We can take p common, 1 plus q square, so p is what? 0.4. 1 plus q is what? 0.6, and q square it is 0.36. So 0.4, 1.96, which is equal to 0.784. So probability of x less than 3 is equal to 0.784. Now next very important question of the distribution. If x and y are independent random variable, each following geometric distribution p into q to the power x, x varies from 1 to 3 up to so on, then we are to show that probability of z is equal to n. Z is what? Z is maximum among x and y. Z is maximum of x and y, means we are to find the probability of z is equal to n, which is equal to, we have to show that probability of z is equal to n is equal to p into q to the power n minus 1 into 2 minus 1 plus q into q to the power n minus 1 for all n varies from 1 to 3 and so on. Now z is maximum from x and y, and we are to find probability of z is equal to n. So which is clearly we can say that z is equal to n is equal to probability z less than equal to n minus probability z less than equal to n minus 1. z is equal to n the probability find करनी है ना, so z is equal to n is equal to
z less than equal to n minus z less than equal to n minus 1. It means we have to find the probability of z less than equal to n. फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, z less than equal to n minus 1 ਤੇ probability find ਕਰਾਂਗੇ. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ subtract ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ that will be the probability of z is equal to n. now ਅਗਰ z less than equal to n ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, so say this is equation number 1. so z less than equal to n ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, z is what, maximum from x and y less than equal to n. so maximum x ਤੇ y ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ that is less than equal to n, it means x ਵੀ less than equal to n ਹੋਏਗਾ ਤੇ y ਵੀ less than equal to n ਹੋਏਗਾ. in the statement it is given that x and y are independent random variable. अगर x ਤੇ y independent random variable ने, we know that if a and b are independent random variable then probability of a intersection b, a ਤੇ b दो event ने independent ने, then probability of a intersection b is equal to probability of a into probability of b. so we can apply the same result here. probability x less than equal to n less than equal to y less than equal to n, x and y are independent variables, so this is probability x less than equal to n into probability y less than equal to n. so say this is equation number 2. now first of all we will find probability of x less than equal to n. now probability of x less than equal to n, which is equal to summation x varies from 1 to n fx is what, fx is p into q to the power x minus 1. स्टूडेंट इथे बेटा एक करेक्शन कर लो, q to the power x नहीं है, q to the power x minus 1. now वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, p प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू p into q to the power n minus 1. so this is a finite GP series with the first term p and common ratio is q and number of terms are n. so its sum a 1 minus r to the power n over 1 minus r. so this is the probability x less than equal to n and it is independent from x. so therefore probability of y less than equal to n दी अगर गल करिए that is also equal to p into 1 minus q to the power n over 1 minus q. okay, now 1 minus q which is p, so cancel these two terms. so therefore probability x less than equal to n is 1 minus q to the power n and probability y less than equal to n also 1 minus q to the power n. now from equation number 2 probability of z less than equal to n, इत्थे तुहाडे कोल की आएगा less than equal to n, probability of z less than equal to n now probability z less than equal to n which is probability of x less than equal to n into probability y less than equal to n 1 minus q to the power n into 1 minus q to the power n. so which is 1 minus q to the power n whole square.
This is probability z less than equal to n. Now from equation number 1, probability of z is equal to n, which is probability z less than equal to n minus probability z less than equal to n minus 1. Now z less than equal to n ਤੇ probability ਜਿੰਨੀ ਸੀ that is 1 minus q to the power n whole square. So z less than equal to n minus 1 ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ n ਨੂੰ by n minus 1. So we will get 1 minus q to the power n minus 1, 1 minus q to the power n minus 1 whole square. Now apply identity here. 1 plus q to the power 2n minus 2 q to the power n minus 1 minus q to the power 2n minus 2 plus 2 into q to the power n minus 1. So we will get 2 into q to the power n minus 1 minus 2 into q to the power n minus q to the power 2n minus 1 minus q to the power 2n. Now taking 2 into q to the power n minus 1 common, 1 minus q, and taking 2 q to the power 2n minus 2, 2n minus 2, 1 minus q square. So ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 minus q into 1 plus q. Now taking 1 minus q common, we will get, taking 1 minus q common, we will get 2 into q to the power n minus 1 minus q to the power 2n minus 2 into 1 plus q. 1 minus q, which is p, also take common q to the power n minus 1. So we will get 2 minus q to the power n minus 1 into 1 plus q. So therefore probability of z is equal to n. Probability of z is equal to n is equal to this one. ठीक है, सो यही असी प्रूव करना सी. सो मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशनस बेटा तुहाडी आलमोस्ट कंप्लीट आ. Now in the next lecture we will start a new distribution, Poisson distribution, which is very important distribution. Okay.